जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा जो सेशन हम रखे हैं खास तौर पे हिजाब का इशू समझने के लिए, और हम लोगों की कोशिश थी कि कुछ हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, खास तौर पे जो कम्युनिटी के लोग समझना चाहते हैं मुसलमानों का पर्सपेक्टिव क्या है, तो हमने कोशिश की है कि उन लोगों को भी आज इनवाइट करें ताकि उन लोगों के जो डाउट्स है, और इतना ज्यादा जो मीडिया चैनल्स पे बहुत ही एक पोलराइज डिबेट और बहुत ही हेटफुल कैंपेन चल रहा है, तो उसमें जो भी हमारे सिस्टर्स या जो भी जा रहे हैं वो सही तरीके से जो असल पर्सपेक्टिव है कम्युनिटी का, और ये इशू क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके लिए क्यों इतना ज्यादा मतलब एजिटेशन हो रहा है, ये सब चीजें थोड़ा सा समझने के लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोग एक डायलॉग करें। एंड आई हार्टली वेलकम all the non-Muslim brothers and sisters who have joined today, and I would like to hear first from them. I would be requesting the host to please make them co-host. At the same time, I would like to introduce myself. I am Dr. Asma Zehra. I am associated with Muslim Girls Association. We have been working for awareness of education in the girl students for the last 30 years. At the same time, I also represent Muslim Women Association as well as All India Muslim Personal Law Board Women's Wing. Along with me today, we have Advocate Afsar Jahan. She is a practicing advocate, also handling marriage issues, and also she's a counselor. At the same time, we have Dr. Samiu Zama Sahab, who is a senior cardiologist. He is known to most of the medical fraternity. He requires no introduction, but one of his important achievements is he is working hard to bridge the gap between the Muslims and the non-Muslims. So that is something very, very needed in today's time. It is one of the essential things needed because there has been so much of polarization because of the media especially, and the agenda of the government also. So at this point of time, I would be requesting Dr. Samiu Zama Sahab, and I would be requesting the host to please kindly make co-host all our non-Muslim brothers and sisters who have joined so that we can hear from them also. Over to you, Samiu Zama Sahab. You can begin today's discussion and followed by Afsar Jahan ma'am. आप उसके बाद बात कर सकते. Assalamu alaikum. Good evening to all of you. Since so many years, I am working to bridge the gap between Muslim and non-Muslim brothers and sisters. I am the convener of an organization called Sadbhavana Manch. So we are trying to create awareness among the Muslim and non-Muslim brothers and sisters, and the controversial issues we are trying to clarify from our side so that misunderstandings should be removed among us and we should come closer to each other. And it is not a Muslim issue this time. Appears to be Muslim issue, but one after the other they are bringing the laws, and they are making so many laws which will affect all the communities in future. जैसा कि हमारे दलित भाई बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है, और उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये उस जानिब बढ़ रहा है जहाँ पर टोटलिटेरियन, और जिस तरह से कहते हैं कि एक जाबिराना हुकूमत जिसको उर्दू में कहते हैं, इस तरह से ये उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो हमको अभी से जागरूक होना है, अभी से एक दूसरे से करीब आना है. Justice loving persons and the persons who want India to be united and peaceful, they should join their hands to come together and save our fundamental rights so that the India will be united and will not be affected by divisive forces. तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो इसी सिलसिले की आज की मीटिंग है. मैं समझता हूं कि हम सबको अपने पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक दूसरे को ख्यालात बताना चाहिए कि हम इस जंक्चर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू. तो इस सिलसिले में मशवरे आप लोग दीजिए.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्मा बाजी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो आ रही है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए। जी। देखिए, ये एक बहुत छोटा इशू था जिसे एक कम्युनल फेस बना दिया गया। ये एक चंद स्टूडेंट्स और एक कॉलेज या स्कूल मैनेजमेंट के बीच था। ये इट वाज ओनली अ स्टेटमेंट, एक जियो था जिसकी वजह से वहां पे ये लोगों ने जो है इस पे रोक लगाई थी और वो वहीं सेटल हो सकता था। दूसरा इंसिडेंट जो हुआ उस लड़की मुस्कान के साथ उस मॉब के अटैक के बाद, ये एक बहुत ही ज्यादा इसकी वजह से आउटरीच हो गया। अचानक पूरे हिंदुस्तान में हर और इसको पूरा एक कम्युनल फेज बना दिया गया। हमको ये समझना जरूरी है कि ये एक फंडामेंटल राइट बहुत आराम से कोर्ट सेटल कर, या फिर गवर्नमेंट के पास भी अमेंडमेंट के पावर्स हैं। वो हर बार इस तरह के कभी भी कोई भी रूल हो, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, लेजिस्लेटिव एक्शन हो, उसको जो है दोनों के अगर ये जब भी कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, हमको ये समझना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो डेफिनेटली कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। कोर्ट को पावर्स है कि वो इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे और सबको एकोमोडेट कर दे। लेकिन हमको ये जानना है ये शुरुआत कम्युनल फेस किसने बनाया। आज 73 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस से हमारी हिजाबी लड़कियां क्या ये सब अनपढ़ हैं? क्या सब बिना हिजाब के गई थी कॉलेजेस? अब तक जो जितनी औरतें हमारे पास पढ़ी हैं, क्या वो बेहिजाबी थी? उन्होंने हिजाब करके ही तो अपनी पढ़ाई की। तब किसी गवर्नमेंट को, किसी इंस्टीट्यूशंस, किसी स्टेट में इस तरह की इशू नहीं बनी। अब क्यों बनी? अब इसको एक पूरा पॉलिटिकल सूरत बना दिया गया है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दोज गर्ल्स, लेकिन अगर वो भी अपनी राइट मांगते और वो उस मैनेजमेंट को अपने रूल्स की इशू थी तो वो सेटल हो सकती थी उस लोकल लेवल पर ही। लेकिन इसको आरएसएस और बीजेपी ने इसको एक बहुत डेंजरस सूरत, इसको एक कम्युनल राइट्स में बदलने की कोशिश की। हमको ये भी समझना होगा और ये भी देखें कि हम कितनी भाईचारगी से रहे हैं हमेशा। आज भी जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं 14 इयर्स से मेरी स्टैंडिंग है, मैं हिजाब में जाती हूँ। कभी किसी कोर्ट ने, हालांकि कोर्ट को इख्तियार है, दे हैव द पावर्स, वो चाहती तो मुझे एक यूनिफॉर्म, कोर्ट का एक यूनिफॉर्म होता है, लेकिन हमें कभी हिजाब उतारने की उन्होंने कभी हमको किसी कोर्ट ने, चाहे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो या कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कहीं भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है किसी भी हिजाबी एडवोकेट को। ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद लॉ इंटरप्रेट करने के लिए बैठी है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। अचानक इनको इतनी बड़ी इशू क्यों हो गई है? तो ये प्रोवोकेशन है और कुछ नहीं। और ये एक ही मकसद पर है कि ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। आज ये हमारी नेशनैलिटी पे सवाल उठाते हैं, कभी ये हमारे पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठाते हैं, हमको कटघरे में खड़ा करके पूछते हैं कि तुम्हारे लिए नेशन बड़ा है या रिलीजन बड़ा है। आप ये बताइए, कितने पब्लिक ऑफिसेस को आप सर्वे करके देखिएगा, हर जगह भगवान की फोटो होती है। सारे मुसलमान जितने जाते हैं रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे तेलंगाना में बतुकम्मा हम सेलिब्रेट करते हैं, कोर्ट प्रेमिसेस में हम करते हैं। मैं बार बार कोर्ट की इसलिए मिसाल दे रही हूँ कि इससे बड़ी क्या पब्लिक ऑफिस हो सकती है, आप मुझे बताइए। बल्कि सारे एडवोकेट्स, हिजाबी एडवोकेट्स भी, हम पानी ले जाना, उनको देना, उनके साथ बैठना, खाना, उनकी पूजा के साथ भी हम मतलब सब रेस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। फेथ और बिलीफ अपनी जगह है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, कभी कोई इशू नहीं आई। आप सारे पब्लिक ऑफिसेस में, कितने पब्लिक ऑफिसेस में देखें, आप देखें एवरी सैटरडे एंड फ्राइडे दुर्गा पूजा होती है। कभी किसी ने सवाल उठाया कि ये पब्लिक रन ऑफिसेस है, इसमें जो है सेक्युलर होना चाहिए, तो आप अपनी प्रैक्टिसेस ना करें? किसी ने नहीं कहा। फिर हमारे एक हेडस्कार्फ पहनने पर हम पर इतने निशानियां सवाल उठ गए, हमारी पेट्रियोटिज्म पे सवाल उठ गया, हमारी यानी हमको ऐसे जैसे कि क्या हमारे नेशन के खिलाफ हमारा रिलीजन बड़ा बना के, मतलब क्या रंग देना चाह रहे हैं ये लोग?
तो और एक चीज मुझे इन हालात में लगता है, हमें जुडिशरी पे भरोसा करना चाहिए। और ये जो बार बार मैं अपनी कम्युनिटी से भी, यानी मेरे को सिटीजन, फेलो सिटीजन्स यहाँ हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके सामने सबको मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि देखें, इसको प्रोटेस्ट का नाम ना दें। ये यही चाहते हैं कि ये हमारे पेन को फिलहाल नहीं समझ रहे हैं, और ना जुडिशरी डेफिनेटली अपना काम बहुत फेयर करेगी, लेकिन एक प्रेशर कहीं ना कहीं होता है इस राइट्स का। तो इस राइट्स को बढ़ने ना दें। तो हमको चाहिए कि हम गवर्नमेंट को, या इट्स अ प्ली, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको दीजिएगा। अगर आपको पता है कानून, फंडामेंटल राइट्स और स्टेट मेड लॉज, या चाहे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव मेड रूल्स और लॉज कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो एवरी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट्स ही ओवरराइट करेंगे, है ना। तो ये रिक्वेस्ट रखें, और मेरे ख्याल से हम तहम्मुल से रह के इसको प्रोटेस्ट की सूरत ना दें, एक प्ली के तरह से हम जुड़े, इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, बाहर आए, डजंट मीन बट, लेकिन उसको प्रोटेस्ट ना करें, बल्कि उसको एक सॉलिडारिटी स्टैंड माने, एक रिक्वेस्ट करें, एक प्ली करें, और जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा करें। पॉलिटिक्स तो आज क्या है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हम जानते हैं, हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन आज भी है, आई ट्रस्ट एंड आई थिंक कि हम सबको उस पे यकीन हम करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे, वो है जुडिशरी। तो वी शुड वेट एंड सी कि क्या होता है, और लीगल जो भी करना है लीगली करना है, और कोऑर्डिनेशन और होना जरूरी है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में। कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे लगे कि हाँ, इनके लिए रिलीजन बड़ा, ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे लिए हमारा नेशन और हमारा रिलीजन हमारी दो आंखों की तरह है। हम इसमें से एक चूज नहीं कर सकते, ना रिलीजन को, ना ही नेशन को, दो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच अफसर। हमारे साथ जस्टिस बी चंद्र कुमार भी हैं। थैंक यू सो मच चंद्र कुमार साहब फॉर ज्वाइनिंग, और आपसे हम सुनना चाहेंगे आपका पर्सपेक्टिव। फिर वीना साहिबा भी हैं, उनसे भी सुनना चाहेंगे जी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आज आपका डिस्कशन चल रहा। पहली चीज क्या है बोले तो, इंडिया के सिटीजन कौन है? इंडिया के सिटीजन हिंदुस्तान के अंदर जितने रिलीजन के लोग रहते, डिफरेंट फेथ के लोग रहते, सभी लोग जो सो ऑल आर इंडियन सिटीजन्स। सिटीजनशिप डज नॉट डिपेंड अपॉन anyone's particular faith. This Article 5 of our Constitution of India declares the citizenship. So it's very clear that any person as citizens of this country. अब रहा सवाल इक्वालिटी का। इक्वालिटी आर्टिकल 14 बहुत क्लियरली बताती है, the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of laws. तो एवरी सिटीजन, जितने भी लॉस है या जितने भी लॉस का प्रोटेक्शन है, सभी लोगों को इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसके अंदर। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज इक्वल राइट्स। अब दूसरी चीज क्या है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बहुत क्लियरली ये बताता है, the state shall not discriminate. The state shall not discriminate against any person, any citizen, on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. So when state includes all the institutions of the state. State includes even the government colleges, even the government schools, and every institution of this country should be deemed to be a state under the definition of this article.
अब आर्टिकल 25 आप देखिए, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसेंट एंड फ्री profession, protection and propagation of religion, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part. All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. तो ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 and article 16, 15, 16, if we read together, it's very clear that the persons professing different faiths, different religions, they have all freedom to practice their religion, to propagate religion, and right to freely profess. So these articles make it very clear that no person can be forced to follow the directions of any person, any organization. अब देखिए आर्टिकल, I would like to refer to article 29 also. Article 29, I will read it. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. No citizen shall be denied admission to any education institution out of the state funds on the grounds of religion, on the grounds of only of religion, race, caste, language or any of them. अब देखिए आप लोग जरा सेक्शन 29 को और एक बार देखिए, उसमें ये बताता कि जो सो any section of the citizens having a distinct language, script or culture, ये वर्ड्स है ना, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एक है, स्क्रिप्ट एक है एंड कल्चर भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया. तो जो अपने अपने कल्चर को फॉलो करना चाहते, जो अपना अपना रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहते, दे हैव राइट टू कंजर्व द सेम. उसको जो सो वो लोग बचा सकते हैं, उनको जो सो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको वो राइट को जो सो कंजर्व कर सकते हैं वो लोग. ये आर्टिकल्स बहुत क्लियरली अपने को जो सो बताते हैं. अब रहा सवाल ये अपने आजकल जो सिचुएशन अपनी कंट्री के अंदर राइज हुआ, एक्चुअली मेन चीज क्या है, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, those who have come to power, unfortunately they have not taken interest to create or so this cultural revolution which has to be brought, which the ruling class ought to have taken interest to propagate secularism, to propagate brotherhood, and to see that the persons belonging to different faiths live together happily without any conflict as brothers and sisters, and this was not done by the ruling class. And particularly when those who are in power, they fail to solve the problems of the citizens of this country. Maybe unemployment, maybe rising prices, or maybe the issue of black money, black marketing, whatever it may be. So they wish to come to power again by dividing the people, or by, what I mean to say, creating an atmosphere that or an impression that they are the protectors of a particular religion. And they feel that if they give such kind of impression, or they pose like that, majority sections of that religion will vote for them,
or would again make them to come to power. So under this impression, probably they are doing all such activities. Now a situation has come. The intellectuals of this country, the real patriots, are those who have interest in the nation. Interest in the nation means interest in the citizens of this nation. Citizens of this nation includes everybody. Persons belonging to different religions, different faiths, different castes, different whatever it may be, all are included under the definition of a citizen of India. So it is the responsibility of intellectuals. Of course, the main responsibility lies on the state or those who are in power. But when those who are in power, they are not recognizing the rights of the people, or they themselves want to divide the people, or when they themselves want to create conflicts among the different faiths of the people, now the responsibility turns to intellectuals, doctors, advocates, professionals, and professors, lecturers, teachers, everybody, to see that the Constitution should be protected. The values of the Constitution should be protected. And values of the Constitution are the basic features of the Constitution include secularism. And Supreme Court has said it very clearly. In several decisions, Supreme Court has said that basic features of the Constitution include secularism. So the protection of secularism, protection of secular values are propagating brotherhood, are trying to improve the brotherhood among different faiths of the people, becomes the vital important issue. And every intellectuals in the interest of nation, in the interest of society, in the interest of peace and tranquility should try to see that such conflicts should not arise in this country, or even if they arise in any institution, they should come forward and see that such conflict is resolved peacefully, happily, so that all persons, though having different faiths, live together happily. So this is my view. मैं समझता हूँ कि जो सो थोड़ा बहुत whatever it may be, मेरे views आपके सामने मैं पेश कर सका हूँ. और खासकर ये चीज है कि जो सो आजकल नौजवानों को पर भी ये बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जो सो अपनी मुल्क को अपन बचाना चाहिए, और अपने मुल्क के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर जो सो आप लोग ध्यान देना चाहिए, तय देना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट है, राइजिंग प्राइसेस है, पॉवर्टी है, और इतने जो सो आजकल दिक्कत में मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग और लेबर सेक्शंस जी रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचते नहीं, और फालतू इश्यूज को लेके जो सो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं. वो तो आई एम वेरी क्लियर इन माय माइंड दैट जो भी लोग ये कॉन्फ्लिक्ट को जो सो आजकल लाना चाह रहे और वो कॉन्फ्लिक्ट से जो फायदा उठाना चाह रहे सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं और सिर्फ पावर चाहते हैं, पावर मांगर्स है. दे आर नॉट रियल पेट्रियट्स, और उनको कोई देश के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर या देश के प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर कोई सिंसियरिटी नहीं है. दीज आर माय व्यूज. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Justice Chandra Kumar sir. Sir, can you just in a few more words, can you guide and give a message, like in this situation, in this scenario where we are working hard at the grassroots level to educate girl students, now there is a roadblock. So at this point of time, one of the steps to eradicate poverty is education of girls. So what more steps can be? Is making minority colleges a solution to the issue, or should we, still No. that will lead to ghettoization kind of a thing, sir. Yes, please give your opinion on this. I feel that will further
further increase the bridge, further increase the gap between the communities. That's not the correct way. So the correct So way. we must approach the court and the high court, sir. That is your suggestion. Well, of course, ultimately, if this, when the state fails to protect the fundamental rights of the citizens have no other way except approach the higher courts, approach the high courts or Supreme Court. Except this, there is no other way. There is no other way. And I think that before that, we have to educate the people. We have to create awareness. See, by conducting education competitions, essay writing competitions about secularism, about secular values, about developing the brotherhood among the different faiths of the people. So this kind of cultural revolution is very much needed. The need of the hour is that all the poets, writers, even the cinema producers, etc., or the TV channels, they have to take interest in the nation and see that the secular values are propagated, so that the conflict between these two sections is reduced to maximum extent. So a lot of work needs to be done at the level of society, at the level of the community and the society. Society. So, and more responsibility lies on the intellectuals, professors, teachers, and this, what I mean to say, those the reporters of the press, editors of the press, because they are the persons who can influence the views of the people. They are the persons who can educate the people. So I think that now the responsibility lies on the intellectuals, professors, teachers, etc., to see that the secular fabric of this country or the secular values of this country are protected. See, this is a country where all the different religious people have been living together since centuries. And whatever the wrong picture of history is being given in regarding some incidents, or false, untrue versions have been again being propagated even through this WhatsApp, etc. And the educated youngsters have to come forward and to give proper reply to them and try to educate them. See, ultimately the solution is only education. Ultimately, the solution is only creating awareness. Ultimately, the solution is making understand the people. See, I don't think that majority of the Indians are communal. No. I am very clear in my view that majority of the Indians have secular mind and secular views, and they respect secularism. Majority of them. And only splinter groups are a minority section that may be under the influence of this fundamentalists. So, right, thank you. Justice sir, what is your opinion about in the present scenario? कि मालूम हुआ कि वो जो लड़की थी वो उसने FIR नहीं किया, तो क्या अभी भी कोई FIR दाखिल किया जा सकता है इसके अंदर? और फिर जो एक लड़का एक भगवा जो झंडा लहराया था, इस पर भी कोई FIR किया जा सकता है? कर सकते हैं, FIR तो कर सकते हैं। जब कभी जो सो आपको you can study the provisions of the Indian Penal Code and other laws, and after studying them, जो भी sections attract होते हैं, वो sections के तहत जो सो अपन FIR issue कर सकते। Even late भी हुआ, even delay भी हुआ, delay भी कोई बड़ी बात नहीं है। Under the circumstances, courts will understand the delay, under what circumstances delay occurred. So even after lapse of some time also, FIR can be lodged, no problem. Thank you so much, Justice Chandra Kumar Saab. We are very much thankful to you, and we would be happy if you continue to listen our views also. There are few more intellectuals who have joined. I would be requesting Sister
Veena Shatraguna to please. I would try because I'm not feeling Okay, well. sir. Thank you so much. I will be Okay. there for some time. Okay. Some time. Okay. But when will Thank it you so happen? much. Right. Well, I'm Manaji. Veena Shatrugna, and to tell you the truth, I am so disturbed that it's very, very difficult to tell this august group what is right or wrong at this stage. But one thing you must accept, that the right wing has managed to convince large sections regarding a few issues, and the strategizing will have to be done very carefully. I really appreciated Afsar Jahan's statement that we must be very careful that we do not resort to any violence. But remember, this time round, the right-wingers have gone to small towns, and especially, I'm right now in Bangalore, especially areas of Udupi, which has a very strong right-wing group, and it's full of the BJP supporters and groups. Now, what I would like to tell you is what is wrong with the Hindu groups, because I cannot get into your shoes and tell you what you should do, but I do know what I'm first ashamed of the fact that I'm identified with the majority community. Partly, of course, I'm an atheist, but that doesn't stop me from being identified with them, is that they have created a whole group of young unemployed boys, especially, and made them lynch mobs. Do you know what that is going to do to society? Lynch mobs are going down streets of small town, trying to catch anyone who remotely look like they have eaten meat or are part of a system where non-vegetarian is appreciated. Remember, Karnataka has banned beef, and thousands of people from Qureshi community have to close their shops, are on the roads, and many of them are starving. Unfortunately, that is a community that requires a lot of support, but I hear my friends who are working with the Qureshis say that they have been isolated very, very badly. So they have managed to produce a whole generation of lynch mobs, right? And this is very frightening for even the majority community, that our boys are, and this is not the upper caste boys. These are the BCs and Dalits who have been given a task for the nation. So they talk in terms of patriotism, nationalism, and something they're doing for this country. Now, why am I telling you all this? So that you have to ask, what is Amit Shah's son doing? What are the children of the BJP leaders doing? Why do they have to pick up vulnerable young boys and convert them into lynch mobs? That's number one. And each of these boys assume that they are protecting Muslim women. Remember, they are the protectors of Muslim women. And especially women in hijab, need protection from the upper caste, from the Hindutva, from the majoritarian community. Now, from where they've got this impression, it's very difficult. I think one has to go back in history to understand this. The third thing is that these are the very boys who have tried to auction elite women who do not wear the hijab in the Bulibai and the Salibai, whatever you know about those auctioning of women on the net. So they don't see the contradictions. Now, if women do not want to wear the hijab, they are seen as a threat. And if they wear a hijab, they are seen as a threat. So as on today, the BJP's agenda seems to have succeeded in creating a confused mass of people. And this is really the poor, the Dalits, the BCs, unfortunately, and not able to see the difference and see the mess that they are in. Of course, as far as families are concerned, I have no idea about the women, but there's a ghettoization where I find I cannot talk to women. The women of my class
there's nothing I can discuss with them, because their position on minorities is like determined by the whole debate on triple talaq or hijab, or I mean, they have 2.5 issues on which they think they know everything about Muslims. There is some level of illiteracy about Muslims, and nor are they willing to put in any effort to understand. Look what they said about Shah Rukh Khan, that he was spitting on the thing. They don't understand what dua is, what punkna is. So that is the level of illiteracy. And I'm only giving you a part of a life that I know about. I cannot tell you what you must do, but I really appreciate the fact that this protest, CA protests, NRC protests, if one goes by those standards, I would say salam to all of you for having done it without any problem. And I think that should be the guiding principle. And we have to be prepared for a few years of this kind of attack. And I wish I could do something sitting here in Bangalore, but I can only hope that the country does not have to live through this kind of situation very long. Thank you very much for letting me speak. Thank you. Thank you very much, ma'am. Your talk was also reflecting the pain that you had for the situation for our country and our nation. We are very, very grateful that you have joined, and you have really enlightened us about those other marginalized sections of the society, especially the young boys who have been into this business of, they have been put into this business of mob lynching and kind of a, attacks on the Muslims, which is something very, very sad, because that is our future and our future is at stake. Yes, Sister Advocate Afsar Jahan, we will allow you to speak. And if there are other more brothers or sisters, please just raise your hand. You will be given the option of co-host. Yes, Sister Afsar. Assalamu alaikum. I really actually wanted to thank Justice Chandra Kumar sir and Veena ma'am. Though they said ki we are not in a position or not able to understand what to suggest you all, but you all have given us very good suggestion. Justice Chandra Kumar sir has given a suggestion that we should bring awareness among the community, should run awareness programs. That was an important suggestion. And Veena ma'am has given us a very good suggestion that CA protest standards are supposed to be observed while we carry on this protest again. I really thank you, ma'am, for guiding us, and thank you, Chandra Kumar sir, Justice Chandra Kumar sir, for your guidance. And Veena ma'am, please आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं वहाँ बैंगलोर में आपकी इतनी यानी अहम और इतनी कीमती जो राय है, ओपिनियन है, that is more than enough for us, and please keep us guiding like this. Thank you so much, ma'am and sir. जी, फर्स्ट बात करना चाह रहे हैं तो उनको को-होस्ट बनाया जाए. Thank you so much, अफसर. जी, बोलिए. Yeah, hello, Dr. Asma Zehra. Assalamu alaikum. This Yes. is actually Basima Faisal Haq. I'm an advocate in Calcutta High Court. Yes. Okay, so see, we have always seen this. Hello, Justice. Thank you so much for allowing me to speak on this platform, and Ms. Veena as well. So the thing is that what we have observed ever since our childhood, we have known India as a heterogeneous country where we have been living like, by everything. Okay, so, with all by abided communities, with all the languages spoken around the world, it's known as like, it's a very heterogeneous country in which people, like, a democratic country, people by the nation for the nation. It's being very well observed. So I was doing my college, and I have always been observing my parda ever since I was doing my BA LLB. All right. And my sister, she is also, a doctor. So she has also been observing her parda all the time. Means even if she goes to the OT, she tries to do her sanitizing kit and everything. But this has never been an agenda. But right now, when it started off, I am getting like, even I go to Calcutta High Court and all, I am the one like, alhamdulillah, and like me, many other people, I'm sure that they are observing like, around the world. Okay, so when we were in college, no one questioned us about such thing that, why are you observing the parda and this all thing? Okay, the hijab especially, because this is something, we have to say, if a girl is wearing a skirt, then certainly she is being pinpointed that, she is the one who actually, actually provocated the person to do something with her.
And if a girl is wearing a hijab, then it's a very prominent thing said that she is the one suppressed by either her husband or her brother or her father. Okay, especially in Muslim community, where it's not the case. Because when I go out, I know that, it's personally my choice. Why? Because my husband doesn't know that what I'm going to do, outside my home. My father doesn't know what I'm going to do outside my home. But definitely it's by my choice. So I'm doing it as per my own will. And no one has the pressure on me. That is the basic understanding which everyone has to do around the world. I mean, especially in India, what we are facing it. And that is one thing, it is very prominently said. I don't know why, but it has been inculcating thing. We don't want to indulge in such thing, but starting from triple talaq to everything. Okay, that, in some of the news channel, it was being showed that some women are very happy. I don't know where these women were picked up from and who, so gave their interviews that, no, we are very happy with this decision coming up. I mean, why targeting, the minorities, or why targeting a particular community about it? Whereas it is nowhere relating, because my friend, we were 4 of our friend. Okay, I'm sorry to mention this, but right now I have to, just to let people know that we have been coming from background. One of my friend was Bengali, one of my friend, I was Muslim myself. I'm sorry to use this, but then again, I'm just mentioning it just for knowing purpose. One of my friend, she is, Gujarati. One of my friends, she is purely Bengali. Okay, so now they have been raised up in different countries, around the world. So in that particular region, she was being questioned that why, what is happening in India? Isn't it a democratic country? Isn't it a democratic country? I mean, just not focusing on economic developments, just not by focusing on different, spheres which we have to focus on. We are just looking forward that why Muslims are lacking behind, what are the problem of Muslim women? And when Muslim women wants to wear hijab, then they are targeting this, that, they have been actually provoked by someone, they have been asked by someone, or they have been suppressed by someone to do so. If our friends, my friends used to wear alhamdulillah, whatever they want to, okay, and I used to wear whatever I want to. So no one has the right to question over it, that, what dress you're going to wear, and why should you be wearing this, and why not you should be wearing this. I mean, that doesn't make any sense at all. Exactly, you are very much true. It's just wasting the time of the judiciary, wasting the time of the nation, and keeping us busy in something which hardly is actually none of. As a ground focused as well. We have economic developments. We have we have actually our GDP rate have fallen down a lot. So we need to focus on these things rather than just by focusing on that. If someone is agreeing to it, why not someone is agreeing to it? And if someone is not agreeing, or someone is agreeing to it by their own will, that means that person is being suppressed. I mean, what are they trying to do? Just they making people go merry-go-round around the bushes, just to make confusions, just to create confusions. I mean, what? Yes, exactly. You're very much true. Sisters, it's none of our business to enter into a personal domain of anybody, telling them what should be your dress and what is it that you are eating. And that is where we need to just shut up and let people decide for themselves, because each individual has a choice. As they has a choice of religion, they also have a choice of conscience to uphold some values for themselves. So basically the whole great nation should not have been busy in such a debate, in the first thing. Secondly, it's equally more tragic to see our nation being defamed globally. So I would be inviting Dr. Mani now. Ma'am, you are the co-host. Can you just please introduce yourself also, please? And then we would like to hear from you, your words, ma'am. I'm sorry. I'm very sorry. I thought it was a lady. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for joining us. Yes, My dear brothers and sisters, yes. I am a proactive man. I am more a rationalist view, but I respect everybody. I have heard so many things, but what is lacking is we are not gathering solidarity. Let us not talk about, in my view, later on I can be countered. Now, who is gathering solidarity? That is missing. It's wherever I talk with people,
they misunderstand. Oh, they are like that. Why should they wear? Why can't they agree and go? And this and that. Come on. This is not what. Can't we live together? Tell me who is gathering this? Who is gathering? It's high time that everybody like-minded, please don't think whole India is divided into two halves or minorities and majorities. No, there are people who have love, affection, faith, and consciousness of living together. And that's what I picked up from. I read various religious books, and Quran Sharif teaches this. Come on. I want somebody to talk about togetherness. I want somebody to say, how are we going to join to what is law? What is this? Let me tell you finally, I don't want to take too much of time. Nothing is permanent. We have seen things just perish over a period of time. Nothing is permanent, for God's sake or whatever sake. It's nothing, it's matter of time, patience, affection, love, togetherness. If it joins, anything can be wiped out. If I have hurt somebody's feeling, please forgive me and let universal brotherhood prevail. Inshallah. Thank you very much. Thank you for those kind words. Definitely, we have to work hard at the grassroots level. You're very much true. If any one of the participants would like to ask a few questions, you can simply just raise your hand. I would be requesting sister from Bangalore, Umme Ahmed Sahiba. You are the co-host. Yes, you can speak, sister. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I begin my talk today by rendering the greetings of peace on everybody over here. I welcome you all to this beautiful dialogue. This is not a debate, my dear brothers and sisters. This is a dialogue, a very friendly dialogue that we're trying to have here, so that we will be able to place our point of views, because not everywhere do we find a platform where we Muslim women are allowed to speak our mind. I am Umme Ahmed and I am from Bangalore, Karnataka. The point that I want to make today is that every Muslim hijab wearing women in Karnataka today is worried that an integral part of her very identity is on the verge of being stripped. This case, if we lose, and may Allah be merciful with us, if this case we lose, the verdict will be wide open to such heinous abuse, just like the interim verdict has already caused teachers of government schools to remove their hijab outside the school premises. Let me remind you, teachers who are the core of our education system, ones who have taught us everything that we know. Subhanallah, they are the ones who have educated us, and we ought to be giving due respect to them. They today were made to remove what they chose to wear from their house. Their choice was asked to be left outside the gate of the school. Their freedom was made to be left outside the gate of the school, and they were walking inside the school as a slave of that institution and not a respected faculty of that institution. Is this what we have come to? Coming to the students, the hijab ban imposed on the girls seeking education in government schools in Karnataka is the first step towards snatching education away from a girl who has already fought poverty, who has already just escaped child labor, who has already just convinced so many people in her house to allow her to go to school, because decades in their family, no girls were allowed to go to school. And now somehow she has convinced them that she wants to go to school. And now the very government who's supposed to facilitate education is what is they are doing? They are bringing yet another barrier, putting yet another barrier, asking her to choose between religion and education. Why, my dear audience here? This is the question I ask. Why are we making education more difficult? Why is that the Muslim who wants to firmly believe in her religion, she believes in her religion, and the Quran states that the hijab is an obligation on her, and she happily wears it from her house, and she is being asked to remove it if she wants to study for some utopian idea of uniform civil code? Is that what we are
trying to test waters here for in Karnataka? This is hurting us where it is going to bleed the most, my dear audience. These girls are poor. They cannot afford private schools. They are dependent on the government to provide them education, and education that can transform their lives and the lives of the generation to come, because an educated woman is an asset to the society. She is her child's first teacher. She touches lives. She is a reformer. Now the government is poking where it's going to hurt the most. Why can't we have government schools where Sikhs wear their turban, where Muslims wear their hijab, where Christians wear their cross, and yet we all abide in harmony, for it is still a human being who is in front of you, and find solace and comfort in what we are wearing? Why do we all have to look as if we belong to some camp in China trying to look all the same? Doesn't India stand and is proud of its secularism? Why remove me of my choice? Why ask me to remove what I chose to wear from my home and come? That is all I ask. Truly beautifully said, Sister Ahmed. You're from Bangalore and you're feeling the pain. And it was very much evident from what all visuals we have seen since morning. The interim order is executed with so much of force that there are teachers or some school management authorities standing outside the gate and making sure that each and every girl and each and every teacher removes the hijab. The kinds of visuals that we have received and the kind of humiliation these hijab wearing women have faced has really hurt us deeply, and we stand in solidarity with all the sisters in Karnataka. It's really painful, and we hope and look up to the Karnataka High Court to immediately look into this issue and give a relief to all the girls who are at a very, very difficult crossroad where they have to choose between the education and religion, which is like you have to choose between food and water. That's what the advocate said. And it's a very tough choice, and it's going to really hurt the community as a whole. Brother Arif would like to speak. Can we make him co-host? You can introduce yourself, brother, and then speak. Definitely. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To each and everyone. And best wishes to all the organizers, and also very many thanks for organizing this discussion. So basically I want to keep this pretty short. Okay, so in my view, what I'm feeling is it is actually a good thing for us to be emotional and think about the problems which are there and the problems faced by our sisters and everyone. And also equally important is I think we should be rational, and we should be brainstorming our ideas how to in order to solve this issue. Okay, so if you basically look at the current scenario, and this is not the first problem or the kind of issue which is created by a particular government. Okay, right from the start of 2014, from which one or other country. Really, the main motto of this government, as we know, is polarizing these communities based on religion and based on other factors. And their main motto is try to get the sympathy and affection of the majority community by showing the minority community in bad light, and trying to get their votes. Okay, so that is a basic basic motto of this government, which I feel. Okay, so I personally see many of my friends who are like many of them from other religions, who are pretty close to our friends who are from other religions in school or college, becoming all of a sudden becoming against one particular religion or against one particular community,
only after the provocations from this what you say government or the particular section or particular right-wing organizations. Okay, so we have to see it in this light. Okay, so I will give you one short example where we can see the farm laws being repealed or annulled by the central government. Okay, so it was not an easy journey for the farmers. Okay, they have protested like for almost a year or more than a year together. They were steadfast in whatever they were doing. Okay, so they did not relent to the aggression of the police or aggression of the political political parties or anything. Okay, they stood their ground. Okay, so that is finally the government had no other chance, no other choice than repealing those laws. Okay, so that is what we should do from our community. Okay, so that steadfastness should be there, but unfortunately I feel that is actually missing currently. Okay, so I'll give a small example to you on the same context. Okay, so now we we have this issue happening in Bangalore and other parts of Karnataka. Okay, so but I see some protests taking place in other states. Like I see my like one of my places where I lived, which is in Andhra Pradesh, that is Kadapa district. Okay, so we have a huge we had a huge protest around 2 or 3 days ago, only by the hijab wearing women. Okay, so they are coming ahead and supporting our sisters in Karnataka. Okay, while the same thing is not happening in our own background. Okay, so that is what I think we are actually missing. So I request and I feel that all our Muslim community and all the like-minded people who are against the right wing should actually unite and try to defeat these people who are trying to make trouble. Okay, thank you all. Thank you so much, Arif Sahab. You are from Andhra Pradesh district of Kadapa? Yeah, I am from Andhra Pradesh, but I am currently working in Bangalore. Thank you so much for your views. Yeah, I would request Sister Farisa, and then after that, Bilqis ma'am. And I request the host to make Manzar Hussain Saab and Bilqis ma'am, both of them co-host. Yes, Sister Farisa. Can you please introduce yourself and then we will listen to you. अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीसा यही हैदराबाद से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो अभी बात किए हैं, अगर हम कोर्ट को अप्रोच हुए तो क्या श्योरिटी है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कर्नाटका कोर्ट क्या किया। कर्नाटका कोर्ट का इंटेंशन हमको पता चल रहा है इस चीज से कि जब तक फैसला नहीं होता हिजाब ना करो। तो ये भी हो सकता था कि ये फैसला होने तक इनको हिजाब में आने दो। तो ये चीज जो है बहुत खटकने वाली चीज है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हुए, इफ वी लूज दिस केस, तो फिर हमारा क्या करेंगे हम? इस पे भी प्लान होना चाहिए, क्योंकि ये चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि हम ये केस, हालांकि अभी हमारे जस्टिस सर बताए हैं कि हमारा कैसा कल्चरल सब हमारे जो राइट्स है वो बताए, बट सुप्रीम कोर्ट पे क्या अब हम वैसा ट्रस्ट कर सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ही वो फैसला होगा वहां पे? इससे पहले के भी फैसले हम देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ क्या किया है। तो अगर हम ये केस हार गए तो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आउट ऑफ द कोर्ट इस इश्यू को सॉल्व करें हम? ये एक क्वेश्चन है मेरा, बस मैं यही बात रखना चाह रही थी। हाँ फरीसा मैम, आपकी बहुत अच्छी यानी फिक्र है। वहां पे लोकली यही कोशिश थी कि तकरीबन आप देखेंगे 6 हफ्ते हो रहे हैं, दिसंबर 27 से ये मसला है। स्टूडेंट्स भी इनिशियली कोई मीडिया के सामने नहीं गए, वो वरांडे पे बैठ के या सीढ़ियों पे बैठ के नोट्स ले रहे थे। उनके कोलीग्स, उनके साथ पढ़ने वाले क्लासमेट्स को बोला गया कि लोगों को नोट्स ना दें, और इसको जो एग्रेवेट करे वहां पे लोकली वो नहीं चाह रहे थे कि ये इश्यू सॉल्व हो। एक छोटी प्लेस का एक, जी मेरी आवाज आ रही है,
एक छोटी प्लेस का एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू था, जहाँ प्रिंसिपल थोड़ा सा मेच्योरली एक्ट कर लेते तो बहुत काफी फायदा होता था। मगर क्योंकि ना आप देखिए जितने शॉल सिलवाए गए, ये सब चीजें पहले से तैयार की गई कि उस नौजवान बच्चों को जो शॉल्स दिए गए तकरीबन वो पहले से ऑर्डर दे के वो तैयार किया गया था। तो देयर इज एन एजेंडा बिहाइंड इट, और उसका कहीं ना कहीं रिलेशन यूपी इलेक्शन से भी है। तो ये सब चीजों को भी हम लोगों को समझना चाहिए। हम कोई भी नहीं चाह रहे थे कि ये चीज इतनी बड़ी हो जाए, लेकिन अब वी आर इनटू द मेस। एक्चुअली इट इज अ मेस क्रिएटेड एंड ऑल टीवी चैनल्स आर जस्ट स्पिलिंग वेनम एंड हेट। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को सोसाइटी लेवल पे ब्रिज द गैप वाला काम करना चाहिए। बिल्किस सुल्ताना मैम, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपनी बात रखें जी। उसके बाद अफसर आप भी बात रखें। यस, बिल्किस सुल्ताना साहिबा आप बोलें, या फिर मंजर हुसैन साहब बात कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। मैं जॉब करता हूँ, और अभी जो हम जिस सिनारे में हम लोग जॉब करते हैं, हमने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, सब मिलके हम लोग कर रहे थे। आज भी हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे कुछ सीक्रेट्स जानते हैं जो मेरे पेरेंट्स शायद नहीं जानते होंगे। एक अच्छा माहौल था अब तक। अनफॉर्चुनेटली अभी ये बोलने की जरूरत नहीं है जो किस वजह से किया जा रहा है, वी ऑल नो दैट। अभी हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये है, और मेरे दिमाग में ये सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि अभी इस हालत में जुडिशरी अपना काम कर रही है, वो क्या करेगी अल्लाह जानता है, वो उनकी मर्जी है, वो जो करना है वो करेंगे। लेकिन हम एज अ कॉमन इंडियन हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो इमोशनली हो, लीगली हो, या वट एवर वेज, ताकि ये चीज इस आग में और घी ना डले, एटलीस्ट पानी डले हमारे तरफ से। इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ किस तरह से हम कर सकते हैं। आज की हमारी ये जो कोशिश है ना डायलॉग की, दैट इज वेरी मच टुवर्ड्स दैट, क्योंकि इट्स अ टाइम वी रीच आउट। हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया था, और हम लोगों ने 2-3 स्टेप्स बहुत अर्जेंट और प्रेसिंग महसूस किए। तो उसमें एक बहुत जरूरी चीज जो हमने महसूस की कि जितने भी रॉन्ग एक पर्सपेक्टिव्स जो पेश किए जा रहे हैं, वहां पे हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम स्पेस को खाली ना छोड़ें, हम आए आगे, अपना पर्सपेक्टिव रखें, और हमारा अंदाज बहुत ही यानी अप्रोचिंग हो, और हम हर किसी से एक अच्छी पीआर एक्सरसाइज करें, हमारा व्यू पॉइंट पेश करें। क्योंकि एक तरह से कोशिश तो है दूरियां पैदा करने की, और हम भी गेटोइजेशन में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमको जिस तरीके से ब्रांड किया जा रहा, कोई भी हिजाब क्लाड, बुरखा क्लाड मुस्लिम वुमन को देखेगा तो बस यही समझेगा कि शी हैज अ वेरी तालिबानी मेंटालिटी, और दे आर ट्राइंग टू इम्पोज शरिया लॉ इन एन इंडियन सेकुलर कंट्री। उसी तरह का उनका जहन बनेगा। तो ये जो इतनी नफरत डाल दी गई, कहीं ना कहीं डायलॉग के जरिए नफरत कम हो सकती है। हम बता सकते हैं कि जी वी आर इक्वली ह्यूमन बीइंग्स लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, एंड वी फील हर्ट व्हेन वी आर मेड टू फील लाइक समथिंग लाइक अ कास्ट सिस्टम जो है, या अनटचेबिलिटी जो है, उस तरह का जो रवैया और सुलूक है। एंड हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं वो सबके सामने रखें। इस वक्त तो बस यही चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। वी हैव वेरी लिटिल, बट वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट गिव इट अ ट्राई। दैट इज व्हाट वी ऑल फील, एंड दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट टुडेज डिस्कशन। जी, और लोग जो बोलना चाहते हैं, यू कैन, यस प्लीज ब्रदर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फिर बात करें जी। यस ब्रदर दानिश आलम, आप कहाँ से हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और आप बात कर सकते हैं। दानिश आलम जी। जी अस्सलाम वालेकुम and good evening to everyone. Myself Danish Alam, and currently I am pursuing BA LLB from Jamia Hamdard. Like the current scenario which we are seeing in our nation, that the atrocities of the state and the judicial system and the bureaucrat as well. But my point is not about the orthodox, about the majoritarian, what they are doing, because they are the intentionally they are doing as they have assigned their work, right? So like what I am trying to say कि आजादी के इतने साल भी आज जो हमारे पास जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है इंस्टीट्यूशन का। लाइक कर्नाटका हाई कोर्ट
या कर्नाटका कॉलेज में जो भी सिनेरियो चल रहा है वो गवर्नमेंट स्टेट कॉलेज है। तो मैं बस मेरा सवाल एक छोटा सा है कि इन 70 और 75 सालों में हम लोगों ने अपने माइनॉरिटी इदारों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? अलीगढ़ और जामिया मिलिया को छोड़ के अगर हम लोग नजर दें तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी ने अपने इदारों के लिए क्या दिया है? हम लोग तुरंत बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 की, आर्टिकल 17 की, आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 20 की, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ चॉइस, हम सबकी बात कर लेते हैं, लेकिन हम आर्टिकल 29 और 30 की बात नहीं करते हैं, जहाँ पे हमें एक स्पेशल ऑटोनॉमी दिया गया है कि हम अपने रिलीजियस को भी प्रैक्टिस कर सके। रिलीजियस जो है आप बिलीफ को प्रमोट कर सकते हैं, आप वहाँ पे अपना माइनॉरिटी अंडर जो है उसके तहत आप जो है एक कॉलेज और इदारा बना सकते हैं। बस मेरा सवाल ये सवाल भी है और एक ये जवाब भी है, बस मेरा पॉइंट इतना ही था। थैंक जी, यू। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा वो कर दूं, एनलाइटन कर दूं। किसी द इश्यू ऑफ दीज गर्ल स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द पुअर क्लास, बहुत ही जो गरीबी के निचले तबके पे जो स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ भी होंगे, हमारी कम्युनिटी का 83% जो तबका है ना वो गरीब है और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को जाता है। दीज आर द गर्ल्स जिनके अब्बा रिक्शे वाले, ऑटो वाले या फिर कोई दुकान डब्बा ठेले वाले होते हैं। और ये लड़कियों को एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है। जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस की जो फीस है ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी अहम चीज यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि देखिए, आप गेटोइजेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। कई लोगों ने इस तरह की बात भी कही कि व्हाई डोंट दे टेक एडमिशन इनटू अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, व्हाई आर दे क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। दैट इज नॉट द केस। सी, माइनॉरिटी हो या कॉन्वेंट हो या कोई भी और जगह हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे वो लोग जाते हैं जो प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी है। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक जियो जारी किया अब अंडर द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट में सारे अथॉरिटीज स्टेट को है। द वर्ड यूनिफॉर्म इज ऑल्सो नॉट मेंशन्ड इन इट। दे डू नॉट हैव अ पावर टू डिसाइड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो कॉलेज की बॉडी डिसाइड करेगी। कॉलेज की जो बॉडी है उन्होंने यूनिफॉर्म में सारी चीजों को परमिट किया था। 2 साल से ये बच्चियां वहां पढ़ रही थी। अचानक अब इनके साथ एक बायस, एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी हेट एटीट्यूड शुरू होता है। So they have protested for that in a way that they were not allowed, so they were sitting outside. That was a very peaceful, silent form of an agitation, whatever you call it. तो ये स्टूडेंट्स की जो प्ली है वो बहुत ही जेन्युइन थी, उसको वहीं पर सॉल्व कर लेना चाहिए था। ऐसे टाइम पे हम लोग आर्टिकल 28 या वी हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश अवर ओन इंस्टीट्यूशंस, इट इज अ डाइवर्शन फ्रॉम द डिबेट। देखिए, हम लोग अपने गरीब लोगों को हक दिलाने के लिए हमको ठहरना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे वक्त पे अगर हम अपने डिबेट को दूसरी तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि बस हमारे इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, सो हम भी इस आइडिया में नहीं बिलीव करते कि मुस्लिम्स एक तरफ हो जाएं, हिंदूज एक तरफ हो जाएं। इट इज अ ब्यूटी फॉर कंट्री। हमारा मुल्क जो है कई मजहबों का गहवारा है और वहां पर हम हर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। अब ये कई मजहबों में अगर एक मजहब दूसरे मजहब की अलामत या निशानी को देखकर नफरत करने लगे तो दिस हेट इन द आईज ऑफ द मेजॉरिटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी, दिस इज बीइंग इंस्टिल्ड। देयर इज अ किचन ऑफ हेट, जहाँ किचन को जहाँ पे नफरत को पकाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, एंड दे आर स्प्रेडिंग इट थ्रू द टीवी चैनल्स। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये सेंसिटिविटीज और ग्राउंड रियलिटीज भी समझना चाहिए और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए अपने डिबेट से। ये इनके हक की लड़ाई है। दे हैव अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी मस्ट ट्राई टू पुश फॉर द राइट। वी सी टू इट दैट उनके जो राइट्स है वो रिस्टोर हो जाएं एंड देयर इज अ रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। थैंक यू। आई वुड लाइक टू एडवोकेट अफसर जहां to comment on this, and if other Uzma Amir can speak after that. जी, बोलिए अफसर। थैंक यू अस्मा बाजी। जैसे अभी चंद लोगों ने, चंद पार्टिसिपेंट्स ने जुडिशरी पे एक सवालिया निशान उठाया है कि हमने देखा बाबरी मस्जिद का क्या हुआ अंजाम, हम सब जानते हैं, हम मायूस हुए हैं और फिर इस तरह से उसके पीछे ही सीए आ गया
इस तरह से फिर अब हिजाब आ गया और बहुत सी चीजें इस तरह से हम पर अटैक हो रही। आपकी कंसर्न्स समझ आती है, इसीलिए मैं इसका सॉल्यूशन वीना मैम से भी सजेशंस मांगना चाहूंगी कि इस कम्युनिटी को करना चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन मैं अपनी एक राय रखती हूँ ये कि हमारी कौम उस वक्त क्यों उठती है जब कोई हम पर हमला होता है, उसके बाद हम कहाँ गायब हो जाते हैं। मेरा फर्स्ट सवाल ये है। देखें प्लीज, एजुकेशन लिटरेसी रेट हमारे पास, हमारा कितना लिटरेसी रेट है वो जानते हैं हम। हार्डली 5-4% हमारा लिटरेसी रेट है हमारी कम्युनिटी का, हार्डली। और आप देखें हमारी औकाफ की जायदादों का क्या हाल है। आज अभी जैसे आप डॉक्टर अस्मा मैम अभी पॉइंट कर रही थी कि एक मेजॉरिटी 80%, 83% का तबका जो है एक गुर्बत में है या बिलो पॉवर्टी लाइन है या जस्ट एट द पॉवर्टी लाइन है। तो फिर इसका हल क्या है इस चीज का। आप कितनी बड़ी तादाद में हो इस मुल्क में, लेकिन आप इतनी गुर्बत में क्यों हो। क्या हमारी औकाफ की जायदादों पर जब कब्जा होता है तो हमारी कौम कहाँ सोती पड़ी है। अकाउंटेबल सवाल जैसे अब हम उठा रहे हैं, ऐसा हमेशा ही हम अकाउंटेबिलिटी की आदत हमने क्यों नहीं डाली। हम क्यों नहीं सवाल करते हैं उन लोगों से। हमारी डेमोक्रेटिक ये एक डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत है, इसमें हर शहरी को, हर सिटीजन को ये हक है कि वो सवाल करे पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करने वालों को। हम क्यों नहीं करते हैं उस वक्त। तो फिर हमारा हाल जो है सो सही है। और आप देखें जैसे दूसरी चीज है, हमारा मीडिया हाउस ही नहीं है, हमारा कोई आवाज ही नहीं है। आज गोदी मीडिया जिसको आज गवर्नमेंट की जो एक मीडिया है, एक पूरा एक लॉबी जिसकी है और जो जिसे हम गोदी मीडिया से जानते हैं, आज उनकी आवाज देखें, दे शट एवरीवन, इतना चिल्लाते हैं, दे शट एवरीवन। तो हमारी आवाज उठाने के लिए, एक सेक्युलर आवाज उठाने के लिए हमारी अपनी मीडिया क्यों नहीं है। हमारे बच्चे हमारी नौजवान नस्ल जुडिशरी में क्यों नहीं है, हमारी नौजवान नस्ल ब्यूरोक्रेसी में क्यों नहीं है, हमारी नौजवान नस्ल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती है। हम क्या करते रहते हैं हमेशा। हम हमारी जनरेशन्स को कहाँ ले जा रहे हैं। फिर हम ये कैसे सवाल करते हैं, क्यों हमें हमेशा जुडिशरी रेस्क्यू करने आ जाए, क्यों ब्यूरोक्रेट्स हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाए, जब हम खुद, हमारी कौम खुद सो रही है, हम खुद अपने आप को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना नहीं पसंद करते। तो फिर इस तरह के हमले तो होंगे। हम सब ये सवाल करने के भी शायद मुझे लगता है हकदार नहीं है जो आज हमारे हालात हैं। और मैं माजरत चाहती हूँ अगर मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, लेकिन ये वो कड़वा जहर है जो सच है हमारी कौम से लेकर। और देखें अब आते हैं, जैसे मैं एक फील्ड में काम करती हूँ, मैं एक फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम पर भी काम करती हूँ। हमारे ट्रिपल तलाक का मजाक उड़ाया गया। किसी बहन ने, किसी सिस्टर ने सवाल किया था अभी थोड़ी देर पहले, ट्रिपल तलाक का मामला क्या हुआ, वो कौन सी औरतें हैं, वो कहाँ से पकड़ के ले आते हैं जो ऐसी चीजों को सपोर्ट करती हैं। मैं भी इस बात पे हैरान होती हूँ, जबकि प्रैक्टिकली हम अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। ठीक है, हमने शरीयत किसके हाथ दे रखी है। कुरान तो सबके लिए उतरा था ना, शरीयत तो सबके लिए उतरी थी, एक चंद मुट्ठी भर उलमा के लिए तो नहीं थी। तो आप वहां पे इतने आपके ऑप्शंस हैं, आप करेक्शंस क्यों नहीं करते हैं। औकाफ में एक वक्फ एक्ट में जान लीजिए एक प्रोविजो है, वो है उन डेस्टिट्यूट औरतों को औकाफ की जायदाद से, once an औकाफ is always an औकाफ, right? Once a वक्फ is always a वक्फ। तो उस रेवेन्यू से उन डेस्टिट्यूट औरतों को मेंटेनेंस देना वक्फ बोर्ड के, वक्फ एक्ट के अंदर एक प्रोविजो है। कभी किसी ने क्लेम किया? क्या कोई जानते हैं? कितने लोग ये जानते हैं ये प्रोविजन के बारे में, मुझे बताइएगा। कहाँ जानते हैं हम? नहीं जानते हम। और 5-5 हजार की मेंटेनेंस के लिए 6-6 साल कोर्ट के चक्कर खाते हुए औरतों को मैंने देखा, कोर्ट में जंग लड़ते हुए। ये क्या सिस्टम है। तो ये सारा कुछ जब तक हम अपने आप को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाएंगे नहीं, एजुकेट नहीं करवाएंगे, जो जिम्मेदार हैं कम्युनिटी के उनको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, हमारी जायदादों को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये औकाफ की जायदादें सिर्फ याद रखिए मस्जिद और
दरगाहों के लिए नहीं होती हैं। इससे आने वाले रेवेन्यूज को हम हमारी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पताल बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, मीडिया हाउस बना सकते थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते थे। अगर सारी कौम जागेगी तो ही जाकर हम लोगों को अकाउंटेबल कर पाएंगे। तब जिम्मेदारों को, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, उनको लगेगा कि ये कौम आगे बढ़ने वाली है, ये खुद अपने हुकूक जानती है और खुद बहुत स्ट्रांग है। और एक बात मैं ये कहती हूँ, क्यों हम ब्लेम करें दूसरों को? क्या हम हमारे ही मुद्दों के लिए नहीं खड़ते? हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी जिम्मेदार हैं, हम उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, चंद पॉलिटिशियंस को देखते हैं। हम ये आप समझाइएगा, कोई हमें समझाइएगा। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हूँ, ने काम करने का मौका दिया, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। मुझे ये बताइएगा, हम कब बेदार होंगे? क्या हम किसी की आवाज बने? हम अपनी ही आवाज नहीं। दलित भाइयों का क्या हाल है? कभी हम जाकर उनके साथ जुड़ के खड़े हैं? बताइएगा। सर आप म्यूट हो गए। थैंक यू अस्मा मैम। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इम्पोर्टेंट बातें हैं, खास तौर पे जो हमारे, देखिए एक हमारी IAS ऑफिसर थी, शी हैड टोल्ड अस होमलेसनेस इज अ नॉन इशू इन योर कम्युनिटी, अगर आपकी वक्त जायदादें सही तरीके से इस्तेमाल हों। और बहुत ज्यादा उनकी कोशिश थी कि जो मुस्लिम विमेन, डेस्टिट्यूट विमेन हैं, उनके लिए कोई हॉस्टल या किसी तरह का होम हो सके। तो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिस तरह होने चाहिए, वो हमारी कम्युनिटी के जायदादों से नहीं होती। और जो कुछ अब रीसेंट जो जजमेंट आया है, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ टू 70,000 करोड़ पूरे मुस्लिम्स ऑफ हैदराबाद ने लूज किया है उस जजमेंट की वजह से, दैट इज समथिंग शॉकिंग। इट्स अ पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वी आर, आई मीन, लीडरलेस। हमारे पास कायदीन कोई है नहीं कि हम किससे पूछें, अकाउंटेबल ठहराएं। तो दैट इज, बट इट्स नॉट द इश्यू ऑफ द डिस्कशन इन टुडेज सेशन। बट थैंक यू अफसर फॉर हाईलाइटिंग इस। और आपके साथ काफी सिस्टर्स ने अपनी बात रखी है कि दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इट हैज कम इन द चैट बॉक्स। हमारी और जो सिस्टर्स हैं, उज़मा जी, बिल्किस साहिबा, आपको 2 बार को होस्ट बनाया गया था जी। जो भी को होस्ट हैं वो बात करना चाहें तो अनम्यूट करें जी। उज़मा, we will try to conclude by 10 o'clock our discussion today. We have started early at 8:30. और भी कुछ हमारे ब्रदर्स बात करना चाहते हैं तो आप वो करें जी। उज़मा, introduce yourself and you can start. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very greeting to all of you. I'm Uzma Amir. I'm actually postgraduate in electronics and mathematics and science teacher. I'm doing hijab in my workplace, and I never seen कि किसी भी हमारे जो workplace में मेरे colleagues ने disrespect या उसको hijab को degrade करा हो. I always get very good and positive vibes always. I am very much मुझे जो sister अफसर के जो views हैं very much मैं उनसे काफी सहमत हूँ। हमने अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। हम अपने आप को कितना एम्पावर कर रहे हैं, पहले बात ये है कि अगर ये जो हम कितने सालों से हमारे जो मदर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हिजाब कर रही हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो आसपास रिलेटिव्स हैं, अगर हम एक कंट्री की बात करते हैं तो बताएं कब किसने आपको डिसरिस्पेक्ट करा? किसी ने नहीं करा। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो इशू है ये हमें और एम्पावर करेगा, स्पेशली उन सिस्टर्स को कि जो कि एक यूनिटी में नहीं है, जो कि अभी हिजाब नहीं कर रही हैं, ठीक है। और उसके साथ ये जाहिर सी बात है, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि ये एक पॉलिटिकल इशू बन रहा है, पॉलिटिकल बना रहे हैं, पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये इशू बना रहे हैं। अदरवाइज हमारे जो हमारे मामलात हैं उसमें हमने कभी इन चीज़ों को फेस नहीं किया। हम खुद अपने आप को कितना एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे खुद के जो सवाल जवाब रहते हैं, हम उनको खुद कैसे आंसरेबल दे पाते हैं दूसरों को। हम खुद अपने आप को कितना एडुकेट कर रहे हैं इन मामलों में, जब कोई हमसे जो अनअवेयर पीपल्स और स्पेशली जो नॉन मुस्लिम, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, जब इस बारे में किसी भी बारे में सवाल करते हैं तो क्या हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं? वी आर नॉट ओनली एनी पर्सनैलिटी, वी आर रिप्रेजेंटिंग अवर कम्युनिटी। तो अगर आप एम्पावर्ड रहेंगे, आप फुलफिल रहेंगे, एडुकेटेड रहेंगे,
तो ये कैसे होगा बताएं। आप अगर इतने एम्पावर हैं कि आप अपनी सब सवालों के जवाब दूसरों का दे सकते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती आपको इस चीज के लिए रोकने के लिए। अगर आज हम पे ये सवाल उठ रहा है तो इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हम में भी इस चीज की यूनिटी नहीं है ना। किसी से पूछा जाता है कि आप हिजाब करते हैं, वो तो हिजाब नहीं करते हैं, राइट। लेकिन हम, क्योंकि हमें यूनिटी नहीं है इस चीज को भी लेकर, अगर हम सभी हिजाब करते हैं तो कौन रोक सकता है। आज इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकी लोगों को एम्पावर करेगा कि ये जो जिनको ये नहीं पता कि हिजाब क्यों करना है, जो नॉन मुस्लिम्स है, उनको पता चल जाएगा इस चीज से कि हिजाब कितना इम्पोर्टेंट है इन सब के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है कि हिजाब के साथ ये किस हद तक फाइट कर सकते हैं। एक तरह से एक पॉजिटिविटी है ये, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनको हिजाब की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि किस तरह से अब हमने इस चीज को लेना है। जी उस्मा, बहुत अच्छी पॉइंट आपने कही है। इनफैक्ट इवन आफ्टर द मुस्कान इंसिडेंट काफी लड़कियों में बहुत हिम्मत आई है, एंड दैट हैज बीन अ वेरी गुड टर्न वेयर द गर्ल वाज पॉजिटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्किस सुल्ताना साहिबा, आप कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम। नाम बिल्किस सुल्ताना है, मैं हाउस वाइफ हूँ। बस ये प्रोग्राम जब से शुरू हुआ, जब से मैं देखती जा रही हूँ, और ये 1400 साल पुराना जो हिजाब का ये है, अब ये क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग। कई 1% एक छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर एक लोग मिल के इकट्ठा एक बात पे आने के लिए वही छेड़छाड़ करने वाले लोग ही मौका दे रहे हैं। अभी ये मौके को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, सही लफ्जों में अपनी बात, दिल की बात सुनाना चाहिए। हिजाब क्या है, पर्दा क्या है। गैर कौम के लोग भी कई जमानों से पर्दा करते आ रहे हैं। पर्दा करने वाले औरत की बहुत इज्जत दी जाती है। ये हर मजहब में, हर मारवाड़ी ले लो, हिंदू ले लो, पर्दे का इशू ही नहीं है। थोड़े लड़के, चंद लड़के छेड़छाड़ करके ये कर रहे हैं कि इनके पीछे पॉलिटिशियंस रहने से। मगर एक मौका मिला है अपने को, इस्लाम क्या है, पर्दा क्या है, हिजाब क्या है। हिजाब से आने के बाद पढ़ाई में कितना अव्वल दर्जे में रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। हर एक लोग, हर कम्युनिटी के हर लोग भी साथ दे रहे हैं। मगर देखिए, हिजाब के लिए जब बात रोडों पे सब आ रहे हैं, लड़कियां यहाँ आ रही हैं, भाई बहन, उनके भाई बाप, ये लोग सब कोई साथ नहीं आ रहे हैं। इतना भरोसा है कि ये लड़की जाएगी, अपनी आवाज सब तक पहुंचाएगी, अपनी जीत अब करके आएगी बोल के सुना रहे हैं। मगर हर बाप फिक्रमंद होना चाहिए, हर भाई फिक्रमंद होना चाहिए, हर मजहब के लोग इसको साथ दे रहे हैं। एक की छेड़ाछाड़ी ये कभी भी वो नहीं रही है। इससे पहले एक बहन सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगी बोल के फिक्रमंद रहे, ये शक तक भी नजदीक आने नहीं देना चाहिए। मगर ये बात सही है, जब तक कोर्ट फैसला लेगी, जब तक आप हिजाब निकालिए, ये बात सही नहीं है। जब तक कोर्ट फैसला लेगी, जब तक आप क्लास अटेंड होते रहिए, जब कोर्ट जो फैसला लेगी उसके बाद उसको अमल करना रहेगा, ये बात सही रहेगी। क्योंकि अब हिजाब निकाल के आने से बोले तो वो बच्चे अटेंडेंस चले जाएंगे उन लोगों का। जब तक हिजाब का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जब तक वो कॉलेज नहीं आएंगे, इसमें नुकसान होगा। मगर ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा आप रखे हैं, बहुत अच्छी मालूमात है। मगर ये छेड़छाड़ के वजह से पर्दा क्या है, हिजाब क्या है, औरत क्या है, इस्लाम क्या है, ये सब चीजें, एक यूनिटी क्या है, हर मजहब के लोग साथ दे रहे हैं, हर मजहब के लिए। हर कोर्ट के अभी जो सब जो बात करे चंद्र कुमार साहब, ये लोग सब जो भी बात कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जी शुक्रिया, बहुत बहुत सही बात है। बहुत सारी चीजें हम सबको सीखने मिली, और क्योंकि 10 बजने आ रहे हैं, हम लोग 8:30 को स्टार्ट किए थे, तो हम लोग जो है अभी हमारा डिस्कशन क्लोज करेंगे। आप में से जो लोग नई बात की हैं, अगर कहना चाहते हैं तो हमारे पास एक 5 मिनट है। वी विल डेफिनेटली हियर फ्रॉम यू ऑल। यू कैन रेज योर हैंड, आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं। बेसिकली आज का दिन बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह दिन रहा, क्योंकि जो न्यूज आई, जिस तरह से लड़कियों को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को बुर्का उतारने के लिए गेट एंट्रेंसेस पे कहा गया, उसके जो विजुअल्स और वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा हम लोगों को मुतासिर करने वाले हैं। और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत ही अफसोस और गम का माहौल है
कि एक सेकुलर और एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट रहने के बावजूद जिस तरीके से आजियत सहनी पड़ रही है इन लड़कियों को, और इसके लिए हम लोग 3-4 अहम चीजें करना चाहिए, which I feel is the outcome of today's meeting. If Dr. Samir Zama wants to add, he can add. But the first thing is we have to create awareness. Awareness is very, very important. लोगों में शऊर बेदार हो, लोग समझें और अपने राइट्स को असर्टेन करें, जैसे कि एडवोकेट अफसर साहबा ने कहा। सी एजुकेशन इज अवर लाइफलाइन, वी हैव टू बी एजुकेटेड। आज के दौर में जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, हम तालीम से पीछे नहीं रह सकते। तो एजुकेशन पे हमारा जोर हो और उसके लिए जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, वो तमाम ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए अदालतों के सामने, साथ ही साथ जो भी हुकूमत में और ओहदों पे बैठे हैं उनके सामने भी बहुत पुरजोर अंदाज में और इत्तेहाद के साथ हमको अपनी बात कहनी होगी कि आप हमारे हक को हरगिज ना छीनिए और हमको अपने बेटियों को पढ़ाने में हमारे लिए, हमारे रास्तों में जो भी किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हटाइए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को बहुत पुरजोर अंदाज में अपनी बात रखनी होगी, इत्तेहाद के साथ भी अपनी बात रखनी होगी। और यहाँ पर जो बहुत अफसोस की बात है कि जो मौकूफ जिस तरीके से हो कि कहीं ना कहीं कि हिजाब क्या जरूरी है, बुरखा क्या जरूरी है, और एक अननेसेसरी डिबेट में हम लोग एक ट्रैप में फंस रहे हैं। एसेंशियल ऑफ प्रैक्टिस है या नहीं, we have to be very clear and we have to tell everyone in a very clear loud tone कि हिजाब is an essential of our practice। हमारे लिए कुरान में सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, ये नहीं करना हमारे लिए गुनाह है, ये हमारी आइडेंटिटी मार्क है, एक आइडेंटिटी और पहचान का। और साथ ही साथ हम अपने मुल्क में जो दस्तूर है उसमें हमको ये आज़ादी है। तो ये एक क्लियर वे में अगर हम अपना स्टैंड रखें तो बहुत अच्छा होगा। और जिस तरह कंफ्यूज किया जा रहा है कि व्हाट इज हिजाब, व्हाट इज पर्दा, व्हाट इज बुरखा, तो यहाँ पर भी हमको क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। ये गर्ल स्टूडेंट्स काला बुरखा पहनकर कॉलेज पहुंच रही थी, कैंपस में वो लोग स्कूल यूनिफॉर्म जो है, ये इनका पीयूसी कॉलेज यानी कि हमारे यहाँ हैदराबाद में जिस तरह इंटरमीडिएट होता है, तो वो लोग स्काई ब्लू और नेवी ब्लू जो उनका यूनिफॉर्म है उसमें नेवी ब्लू कलर के दुपट्टे के सेम कलर का स्कार्फ अपने ऊपर ओढ़ रही थी। तो उस एतबार से हम लोगों को समझना, ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दे वर नॉट डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट, डेफिनेटली देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म इन द स्कूल और कॉलेज। एंड इसके साथ एक और चीज हमारे ऊपर जो एकदम एक तरह से हमको ब्रांड किया जा रहा है कि हम शरिया लॉ चाह रहे हैं और हम जो है संविधान पे भरोसा नहीं रखते, तो ये सब झूठ है और दरोग गोई है, एक तरह से प्रोपेगेंडा है। और ये कहीं ना कहीं हम लोगों में एक तरह से एक हमारे खिलाफ नफरत, और साथ ही साथ इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट यूपी इलेक्शन में जहां वोटिंग हो रही है इसके लिए किया जा रहा है। तो ये सब चीजों को समझते हुए हम लोगों को बहुत ही पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट भी रखना चाहिए, अपनी वॉइस भी रेस करना चाहिए, डायलॉग भी करना चाहिए, मीडिया में भी अपनी बात बहुत सलीके से रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वी विल हैव लास्ट वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर समीर जमा साहब एंड देन वी विल कंक्लूड। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर टुडेज डिस्कशन। जी डॉक्टर समीर जमा साहब। मैं भी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अलबत्ता एक दो पॉइंट्स और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो टीवी डिबेट्स वगैरह और टीवी में जो बोलने के लिए लोग बुला रहे हैं लड़कियों को, तो हम ऐसे लड़कियों को तैयार करें जो इसके अंदर अच्छा स्टडी करके जाएं और जो हक़ाइक़ हैं, जो रियलिटीज़ हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एड्रेस करें। वरना वो लोग ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को लाएंगे सामने जो इस्लाम को जानते नहीं हैं और कि तमाम चीज़ें नहीं जानते, तो वो गलत रिप्रेजेंट करेंगे। अलबत्ता एक मशवरा एक साहब ने ये भी दिया था कि ऐसी लड़कियों को जिनको मजबूर किया जा रहा है कि वो नकाब वगैरह ना पहने इस तरह से, तो कोई जिस तरह से आजकल चूंकि कोविड का ज़माना है तो सर पर कुछ इस तरह की जो कैप पहनते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए कोविड से, और फिर चेहरे पर मास्क लगाते हैं, क्या सर्जिकल मास्क, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? एक साहब ने इस तरह का मशवरा दिया था। बहरहाल इसको भी हम गौर कर सकते हैं। बहरहाल एजुकेशन को डिस्टर्ब किए बगैर पीसफुल अंदाज में हमको इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए
और लोगों को बाशऊर बनाने की जो बात आपने कही है वो सही है कि हम इसको बाशऊर बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम चीज़ों में कामयाबी अता फरमाए। जी, जज़ाकल्लाह, सबका शुक्रिया बहुत बहुत। और इंशाल्लाह हमारा इस तरह का डिस्कशन हम आइंदा रखते रहेंगे और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर उसमें शिरकत करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।